a city that never sleeps. After 3 long years in the States, I finally got to visit the iconic New York City. Getting to downtown Manhattan from JFK isn't that complicated. Get a free air train from any of the JFK terminals to get to the Jamaica station, and that's where you can get your Metro card. Just fill in some credit and you can use this card to travel in subways. The New York City subway is definitely the most convenient way of commute and is extremely well connected throughout the city. If you are planning to stay in New Jersey like me, use this NJ Transit buses from the Port Authority bus terminal. After getting some rest on day 1, we finally headed out to our first NYC attraction on day 2, the Rockefeller Center. The observation deck on top of the rock offers some astounding views of the city. The Empire State Building and One World Trade Center towards the north, and the Central Park towards the south are clearly visible from the top. अभी हम लोग न्यूयॉर्क आके एक दिन हो गया है, लेकिन हमने आज वीडियो शुरू किया है क्योंकि टुडे वी आर एट दी व्हाट दे कॉल इज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड. सो राइट नाउ वी आर एट टाइम स्क्वायर फाइनली. और हाँ, अगर आप देख रहे हैं मेरे साथ शुभम है, शुभम यहाँ पे था. तो लेट्स गो टू टाइम स्क्वायर नाउ. लेट्स गो. Filled with flashing neon lights, giant digital billboards, costumed characters and musicians, Times Square is big, bright and completely unforgettable. I was living in a place called Weehawken in New Jersey, which had this spectacular view of the NYC skyline just at my doorstep. Day 3 had no big plans, just meeting some old friends and having a good time.
The Grand Central Terminal is the world's largest station by number of platforms, with around 44 platforms situated on 2 different underground levels. So right now I am at the Grand Central Terminal. So ये जो है सुनने में बस एक रेलवे स्टेशन है, बट ये काफ़ी आइकॉनिक है. आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ द पॉप कल्चर, बिकॉज काफ़ी सारे मूवीज़ पे ये काफ़ी सारे मूवीज़ यहाँ पे शूट किए गए. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने कल हो ना हो देखा हो तो उसमें एक सीन है जब अमन डायरी पढ़ता है रोहित की, जिसमें कुछ लिखा नहीं होता लेकिन वो नैना के लिए पढ़ता है, एंड दैट्स द लोकेशन वेयर ही रीड्स इट, दैट डायरी. और ऑल्सो इफ़ यू वॉच फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, उसके क्लाइमैक्स में एक फ्लैश मॉब होता है जो जस्टिन टिम्बरलेक ऑर्गेनाइज करता है मिला कुनिस के लिए, वो भी यहीं पे होता है. सो आई थिंक मे बी ये सब मूवी सीन्स की वजह से ये काफ़ी फेमस हो गया है ये टर्मिनस. इट्स वेरी मच सिमिलर टू CST, बट काफ़ी आइकॉनिक है एंड इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. इफ़ यू लुक फॉर टॉप प्लेसेस टू सी इन न्यूयॉर्क, आई थिंक दिस थिंग विल डेफिनेटली पॉप अप. सो आई वुड से इट्स डेफिनेटली वर्थ इट. After Grand Central, I finally met my good old friend Dipali after a long time, and we found this authentic Irish pub just steps away from the Grand Central. We spent a majority of our day 5 at the Madame Tussauds Wax Museum near Times Square. The museum has around 200 wax figures, including numerous celebrities, sporting icons, and politicians.
of the day, we found this pub by the name Sobs, which hosted a Desi Bollywood dance party. We would cover a lot of iconic places including the Statue of Liberty in the next video. So stay tuned, and until then, goodbye.